Hello students, welcome to Utkarsh classes and we are doing British literature. So, कल तक हम लोगों ने ब्रिटिश लिटरेचर मॉडर्न एज के कुछ राइटर्स करे थे, मॉडर्न एज की कैरेक्टरिस्टिक्स समझी थी, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट समझे थे. दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द मॉडर्न एज. देयर आर लॉट मेनी राइटर्स वी ऑल नो, क्योंकि ये एक ऐसी एज है जिसमें देयर आर फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. द न्यू जनरास हैज कम, न्यू राइटर्स हैव कम एंड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द पीपल वर राइटिंग एंड दे आर एनकरेजिंग द ब्रिटिश राइटर्स ऑल्सो एंड इवन द ब्रिटिश राइटर्स वर एनकरेजिंग द अदर राइटर्स. तो यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम टाइप चालू हो गया था, क्योंकि लोग हर तरीके की चीजों के बारे में लिख रहे थे, एक्सपोजर बहुत सारा था वर्ल्ड का. दैट इज व्हाट वी कैन सी इन द लिटरेचर ऑफ दिस टाइम. तो हम लोगों ने अभी तक जो राइटर्स करे थे उसमें आप लोगों को प्रोमिनेंट राइटर्स के तौर पे मैंने आपको जो राइटर्स कराए थे वो द नोबेल लॉरिएट्स आल्सो. सो वी हैव डन द फर्स्ट नोबेल लॉरिएट रुडयार्ड किपलिंग. देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव डन एच.जी. वेल्स हु इज आल्सो अ ग्रेट राइटर. आई हैव गिवन यू द लिस्ट ऑफ नोबेल लॉरिएट्स ऑफ मॉडर्न पीरियड आल्सो. देन थर्ड इज द जॉन गैल्सवर्दी, दैट इज अगेन अ नोबेल लॉरिएट. नाउ देन आफ्टरवर्ड्स नाउ वी आर डूइंग J.M. Barrie. That is the fourth writer and a very prominent writer of this time. We all know कि ये जो राइटर्स हैं इस मॉडर्न एज के, इन सभी का अपना अपना एक जॉनरा है. इफ आई टॉक अबाउट ऑल द राइटर्स वी हैव डन, अगर हम लोग बात करते हैं एंड आई शुड से कि जो राइटर्स इस टाइम के लिख रहे हैं, जैसे कि हमने जो फर्स्ट राइटर करा रुडयार्ड किपलिंग, ही वाज इंडियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर. सो ही टॉक्ड अबाउट इंपीरियलिज्म, ही टॉक्ड अबाउट कॉलोनाइजेशन, ही टॉक्ड अबाउट वेरियस अदर थिंग्स विच एक्चुअली डिड मैटर इन दिस पीरियड ऑफ टाइम. सो उन्होंने यहाँ पे उन सारे कॉन्टेम्पररी इश्यूज की बात करी, उन्होंने इंडियननेस को दिखाया, उन्होंने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म और उसके इफेक्ट्स को भी यहाँ पे दिखाया. दैट इज व्हाट रुडयार्ड किपलिंग्स कंट्रीब्यूशन इन द मॉडर्न एज. देन इसके बाद अगर हम एच.जी. वेल्स की बात करते हैं तो एच.जी. वेल्स इज टॉक्ड अबाउट साइंटिफिक फिक्शन, दैट इज अ साइ-फाई जिसे हम बोलते हैं. सो ही टॉक्ड अबाउट साइंटिफिक फिक्शन इन दैट ही gave the various examples of Islands of Dr. Moreau. He talked about your time machine and The Invisible Man. Three works are marvelous in the field of sci-fi fiction, and along with that dystopianism and anti-colonial aspects can also be seen in H.G. Wells. He was a humanitarian writer. He is a humanist. He showed the spirit of humanism there, humankind there, and has basically criticized the idea of colonization and imperialism. He just said कि one should not curtail the rights and गुडनेस ऑफ अ कैरेक्टर, वो चीजें नहीं कर्टेल होनी चाहिए, उनको यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए. एंड इवन लोगों के अपॉर्चुनिटीज को, राइट्स को सिक्योर करना चाहिए. इफ यू आर इवन colonizing of land, then also you should be kind to them, you should be progressive to them. It's not you are just extracting the source for your own betterment of life. So that is something he has criticized. When we talk about the third writer, John Galsworthy, he represented the British life in a exact way. He talked about the contemporary issues of the British life and how can these things be better, right? So that is what he has talked about. Now we are talking about J.M. Barrie or James M. Barrie. So who is James Barrie? Basically he is again belong to the Caillard school of poetry, the Cabbage Patch बोलते हैं इसको. He belonged to the school of novels called the Caillard school. तो हम लोग जब यहाँ पे बात करेंगे schools of poetries की या groups की, तो उसमें एक ग्रुप ये भी आ जाता है Caillard group. When I gave you the list of these groups, let me give you, these are the list of groups which I have given you. यहाँ पे एक लिस्ट आपकी और आ जाती है या एक ग्रुप और ऐड हो जाएगा, that is Caillard. Caillard स्कूल, ठीक है. ब्लूम्सबेरी ग्रुप के साथ साथ Caillard स्कूल भी आपका यहाँ ऐड हो जाता है, राइट. सो दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट दीज थिंग्स इन फ्रॉम योर notes. So in your notes, this is how you need to find things. Okay, so then he wrote the biography of Margaret Ogilvy,
Sentimental Tommy, Tommy and Grimace, and Widow in Thrums. All lit idols, that is hero and heroine, taken from a Scottish peasantry. The Little Minister, 1891, converted into a play by the same name, far away from realism and sentimentalism. He talked about the fiction more, and here he was critical in his writings. If we say that is the cabbage patch, is like layer by layer the things are coming out. This is how he was writing. So the works which I have talked about right now, above works, were not much famous. These are the novels which he has written, were not much famous. What are the plays which are famous? The first play he has written is Peter Pan. That is the most famous work written by him. What exactly the Peter Pan is, or the story of the Peter Pan is? See, when we talk about the story of the work Peter Pan, it is about a boy who would not grow. It's not who would not grow. It's like either it talks about an unknown islands, because this is the time when the people were talking about such kind of islands and lands, the foundings, the discoveries of lands and the places which are unknown to the world. So this is basically called when we talk about unknown island, when we talk about a mysterious island or place of the world which is not explored by anyone else, and we are depicting it here. That is also called kind of, हम लोग यहाँ पे काफी सारे साइकोलॉजिकल टर्म्स की बात करते हैं, तो उसी तरीके के टर्म्स में ये चीज आती है व्हेन यू टॉक अबाउट द मिस्टीरियस आइलैंड. सो ये इस टाइम का एक मेन कल्चर था, ठीक है. और इस कल्चर में जो इन्होंने लिखा, दैट इज अबाउट द पीटर पैन. पीटर पैन इज अ story of a character who wish to the God nature when he asked what exactly you want. So he said, I do not want to grow, I want to be a child forever. I want to enjoy my life like this and always will be like this, happy and thing. I want to stick to this of my age. So the God gave him the blessing. Okay, you play a beautiful flute, you enjoy, you love nature. So what can I do in exchange of that? He asked for enjoying his childhood forever. So now Peter Pan is a dwarf boy, you can say, who used to play good flute, who used to sing good music. He used to enjoy his life in the forest, but that is a restricted one. He was not the one, he was the only one who was not growing on the island. Now he fell in love with a girl. The girl grew old. She was growing old, but the boy was not growing up. And after a time, he started manifesting, he started wishing for his aging, for his growth. He also want to enjoy the youth and the adulthood. He want to become more experienced, and now what he was thinking, that I have stuck to this age, I will not vanish. The trees I have played with are dying. The animals I have made friends with are dying. I was not aware about the fact at that time when I wished for the same. That was a fairy land, because so he wished for a thing and that happens. So the boy says ki when I wish for this thing, I was not aware about the fact and the cycle of the life on earth. I just wish to stick to my age so that I can enjoy, but this is the proper cycle when one has to grow. First one is a child, he is dependent, and then he has to start giving life, generate new life, then to take care of this life, and then to vanish in the nature. But here I have stick to one age. Now everyone is growing, everything is growing but me. ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट इनका आता है पीटर पैन का. एवरीथिंग इज ग्रोइंग, एवरीवन इज ग्रोइंग बट मी. इट्स लाइक बिसाइड्स मी everything is growing. So this is Peter Pan when someone has a stick to a particular age and is not growing up, right? So next is the admirable Crichton. ये एक rich family के shipwreck का है, but the main story is Peter Pan which you need to read. ठीक है. इसके बाद आपका एडमिरेबल क्रिस्टन जो है, दैट इज about a rich family shipwreck on an island, and
only their butler knows how to survive there. So they were dependent on the butler. This is the story which is really very interesting, and they were exploring the island again and again. J.M. Barrie is also talking about the unknown island and isolation there, survival tricks over there. So such kind of spirit was very famous during this period, whether it is American literature, whether it is British literature, but such kind of a spirit and complex was very famous over here. Then Dear Brutus. Next work is Dear Brutus. This dramatizes the wish of every man to live his life all over again. Like he wished to live his life. मैं अपनी life पूरी दोबारा जीना चाहता हूँ. That is Dear Brutus. Now then quality state, the lady shows her medals. ये तीन work हैं इनके, The Admirable and Dear Brutus, जहाँ से आपके questions आ सकते हैं. Besides that, it's nothing. So अगर हम बात करते हैं ages की या उनके works की, writers की यहाँ सबसे ज़्यादा है तो कुछ भी है. Romantic period के बाद कहीं ना कहीं modern period is the age जहाँ पे काफी ज़्यादा writers हैं और बहुत सारे works भी important है. This is the biggest age after your romantic period in the size of the writers and their works. यहाँ पे जो works हैं they are very complex also, difficulty level भी ज़्यादा है और इनके वर्क्स को समझना भी जरूरी है टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न एज एंड कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट is Joseph Conrad. Joseph Conrad is again with the spirit of wandering, exploring, and he was the one who has survived the war and has lived his life like a refugee in another country, was forced to change the name and ultimately have become the writer in your Britain. He became the officer also and worked as a British officer in the colony of Africa. There he saw the pains of African survivors or African people, and that is what he has tried to put or to show in his works. He belonged to Ukraine. The scenes in his stories were usually based on sea or a lonely island, which is always in harmony with his somber themes. He always talked about again the lonely islands जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं या जिनको colonize कर लिया गया है, और एक बहुत sober themes के साथ इसमें बहुत absurdity या obscenity नहीं है इनके works में. He was an impressionist writer who used to put impression of certain things through his writings. Original name was Theodore Joseph Conrad. James Maddox Ford wrote about him and Robert writes about him in Return to Yesterday 1932 में इन्होंने जोसेफ कॉनरेड के बारे में लिखा है. His impression is always apparent in the Nigger of Narcissus. Nigger of Narcissus इनकी बहुत important book है जिसके अंदर he talked about the Negro people in the Narcissus is a colony of England that is in somewhere in the area of Africa. तो यहाँ पे Africans दिखाए गए हैं. Nigger means a Negro. He has talked about and their attitude toward the colonization, the imperialism. He was also showed some kind of rejection for the imperialism and colonization. Under Western Eyes 1911 puts a man against the hostile influence of the Tsarist regime. जो Tsarist regime थी, that is इसको हम जर्मन रिजीम्स में लेते हैं. थर्ड रीक के अंदर ये आते हैं आपके Tsarist regimes जो है, that is the third रीक. तो इनके अगेंस्ट लोगों को बताया, that is the Germans one. And then Lord Jim under Western Eyes के अंदर that is the spyhood इन्होंने थोड़ा दिखाया है. Lord Jim is also a very simple character but ultimately becomes corrupt for the things and इनके जो basically जो central character हैं they are somehow antagonist but humanity is still always there in the character, within the character. So ये इन्होंने यहाँ पे दिखाई है चीजें और this is really
like the most contemporary issues of world, the threat of wars, the condition of Negroes, the trading of that British or other colonies in the Africa and other islands, the exploitation of the African people or the colonial people, dominance and dominance of these colonizers and other kind of threat on humanity has also been shown. So now let's talk about the themes of his work. Man against the hostile of the unquiet sea. That is the people who have been colonized, who have been imprisoned within their own land by some other or outside authority. The unquiet sea is like yes, the people are coming through it, taking the dominance of the island or taking the rule of the island and making the people the hostile at their own land. That is what he has talked about. Now the Secret Agent is also a very interesting book which he has talked about, that is a spy, which I talked in the Under Western Eye. तो वहाँ पे जिस तरीके से था, यहाँ पे एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ को दिखाया गया है, वो अल्टीमेटली सुसाइडेड. विक्ट्री, अ पॉइंट ऑफ ऑनर, एन आउटकास्ट ऑफ आइलैंड, टाइफून, अल्मायर्स फॉली. ठीक है, ये जो इनके वर्क्स यहाँ दिख रहे हैं, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स का जिक्र हुआ है विच यू नीड टू रीड टू क्वालिफाई दिस एग्जाम. ऑब्वियसली यू have to read The Snigger of Narcissus, Under Western Eye, Lord Jim, Almayer's Folly, The Secret Agent is also a good work. So इन ये 5 वर्क जो यहाँ मैंने अंडरलाइन करे हैं, इन पे यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं. Almayer's Folly के ऊपर रिसेंटली भी चीजें पूछी गई हैं एंड जो जैसे टाइटल है उससे रिलेटेड वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट थीम या ऐसा जैसे Almayer's Folly है तो व्हाट काइंड ऑफ फॉली ही इज टॉकिंग अबाउट, दैट इज व्हाट यू ऑल हैव टू फोकस. इस चीजों को देखो, टाइटलर चीजों को देखो. ठीक है, जोसेफ कॉनरेड जो है ही इज द पर्सन हु बेसिकली is not British. He's a Ukrainian. But in a war when he came here, we know that he was working for the British company and that is obviously to survive there as a resident. He was doing, he got a job and want to live. But the fact is that he does not in a ideology of colonization or imperialism. He is the human being who does not believe in occupying the rights or curtailing the rights and opportunities of a person. So इनके जो ये मेन वर्क्स हम देख रहे हैं, इसमें 2 वर्क्स अभी भी 2-3 वर्क्स इसमें अभी भी मिसिंग है जो आई नीड टू राइट. एक स्लाइड शायद नहीं है इसकी इनके वर्क्स की, बिकॉज जोसेफ कॉनरेड इज नॉट लिमिटेड टू दीज 5 वर्क्स. ही इज द पर्सन हु हैव अ लॉन्ग लिस्ट एंड यहाँ पे जो इनके 2 मेन वर्क आई शुड राइट. फर्स्ट यहाँ मिस जो हो गया है दैट इज द हार्ट ऑफ डार्कनेस. वी कैन नॉट रीड जोसेफ कॉनरेड बिसाइड्स इट्स द हार्ट ऑफ डार्कनेस. ये तो मस्ट रीड वर्क है इनका. दूसरा आता है नॉस्ट्रोमो. नॉस्ट्रोमो जो इनका वर्क है दैट इज आवर मैन. द मीनिंग इज आवर मैन एंड दैट इज द पर्सन हु वाज अ colonizer but ultimately it started fighting for the niggers, the slaves, the people he was dominating or ruling. ultimately उन्हीं के लिए फाइट करने लगता है और उस कैरेक्टर का नाम नॉस्ट्रोमो इसलिए दिया गया because the meaning of नॉस्ट्रोमो means our man. so the people started calling him नॉस्ट्रोमो. now next work is the lagoon. The Lagoon is also a work which we should read aloud. इसको भी हमें ढंग से
पढ़ना है. Okay, another thing, he was regarded as one of the greatest master of English language also. इन्होंने English language fluency वगैरह के बारे में भी काफी कुछ कहा है. तो it's not only the that he is known best for the work, but we should read him also for his languages also and the command. अगर हम जोसेफ कॉनरेड की बात करते हैं like J.M. Barrie, तो ये एक ऐसा राइटर है which we need to read thoroughly. इसके ऊपर से कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है जो हमें पढ़ना है. नेक्स्ट, आर्नोल्ड बेनेट, हमने ये कर लिया था. आर्नोल्ड बेनेट के अंदर मैंने आपको बताया था, हिल्डा लेस्वे का बता दिया था, द मैन कम फ्रॉम द नॉर्थ भी बता दिया था. ये कल मैंने आपको लिखवा दिए थे बिकॉज इट वॉज रिटन अलॉन्ग विद अनदर राइटर जे एच वेल्स. नेक्स्ट, सैमुअल बटलर हम देखेंगे यहाँ पे. सैमुअल बटलर का जो ये वर्क है द वे ऑफ ऑल फ्लैशेस, ही इज फेमस फॉर दैट. हम सैमुअल बटलर का नाम कई बार पढ़ चुके हैं. ये सेम राइटर हमारे पास आ जाता है विक्टोरियन ईरा में, जिसने जो प्यूरिटन के अगेंस्ट बुक लिखा है ह्यूडिब्रास, वो भी सैमुअल बटलर ही थे. नाउ ही इज द राइटर द वे ऑफ ऑल फ्लैशेस, ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी इन विच ही ट्रेसेस द लाइफ ऑफ 4 generations of Pontifex family to prove that their family is a prison. Their family life is a prison with the parents as its tyrannical keepers. तो यहाँ पे जो ये Pontifex family है, जो Pontifex family है, that is the member, the generation, the new generation of the Pontifex family is here to prove that the parents are like jailer. They used to keep their children as they are tyrannical, and they used to keep their children as a culprit. They put them into the prison like that. So school is a humbug. Moral and religious ideas have no foundation. ये यहाँ पे दिखाया गया. That is a dystopian work and this is very very important. That is why I have marked it. You have to read this book. Okay, children should be sent out into the world as soon as possible with 2 things, money and liberty. तो घर में बच्चों को एक टाइम के बाद दे सेट कि इन बच्चों किसी भी बच्चे को बाहर भेज देना चाहिए विद मनी एंड लिबर्टी, कि जाके अपनी लाइफ अपनी चीजें खुद एक्सप्लोर करो. देन इसके बाद इनका आता है नोटबुक, द ऑथरस ऑफ ओडिसी. ठीक है, दैट इज द क्लासिकल, जो इसका ऑथरशिप है उसके ऊपर सटायर है ये. देन एरवॉन इज नाउ हियर, इसको उल्टा लिखा गया था. इंस्पायर्ड बाय वर्ड्सवर्थ इंटीमेशन ऑफ इमोरालिटी, देन एरवॉन रिविजिटेड. ये जो इनके वर्क्स हैं इसमें से एरवॉन जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इस वर्क के अंदर ही टॉक्ड अबाउट वर्ड्सवर्थ इंटीमेशन ऑफ इमोरालिटी और इससे इंस्पायर है. ये वर्क आपको इनका करना है, बाकी रेस्ट यू कैन लीव. नेक्स्ट इज विलियम जे लॉक. इनके जो ये वर्क है, ही प्रूव्ड द सुपीरियरिटी ऑफ रोमांटिक रियलिज्म एज अगेंस्ट द क्रैस रियलिज्म ऑफ जोला. दैट इज एमाइल जोला ने जो क्रैस रियलिज्म करा था, दैट इज नेचुरलिज्म के प्रोपाउंडर हैं एमाइल जोला. इन्होंने यहाँ उनके अगेंस्ट रियलिज्म, रोमांटिक रियलिज्म की बात करी है विलियम जे लॉक ने. एंड द बिलोवेड वेगबाउंड, सैक्टिमस, 3 वाइज मैन, ये 3 इन्होंने वर्क लिखे हैं जिसमें से आपको जो पढ़ना है वैसे तो यू नीड टू गो थ्रू, बट 3 वाइज मैन जो है, this is an important work by him which you need to read because इसमें he has given the reflection of his philosophy of life. ठीक है, इन्होंने खुद की philosophy of life क्या है वो यहाँ पे इन्होंने बताई है about the romanticism or romantic realism as well. Next is William Fredley Morgan. William Morgan जो है, इन्होंने Alice First Shot, that is about a poor girl rising to womanhood, and Joseph Vance, ये 2 वर्क लिखे हैं. We don't need to read this writer. We can skip him. Obviously, he is not a famous writer, and the works are also not so worthy. Then Rider Haggard, इनके जो वर्क हैं King Solomon's Mine and Alan क्वार्टेरनन, इन दोनों ही वर्क्स में ये जो दोनों राइटर्स हैं, वी नीड टू
लीव दिस वन एंड इसमें किंग सोलोमन्स माइंस में आप सरफेशियल स्टडी कर सकते हैं. देयर इज नो नीड टू गो इन द डिटेल ऑफ दिस वर्क, क्योंकि हम अगर राइडर हगार्ड की बात करते हैं, ही worked for the naturalism and realism of the society, but basically is skipping the main essence of the realism too. So इनका ये वर्क है थोड़ा सा, लेकिन उसके अलावा we don't need to go in the detail of any other simple work, right? नेक्स्ट जो राइटर हैं यहाँ पे, दैट इज जेफरी फर्नॉल. जेफरी फर्नॉल के जो वर्क्स हम देख सकते हैं, दैट इज ब्लैक बार्टलेमीज ट्रेजर, गफर्ड ऑफ वेयर, मार्टिन कॉर्नस्बी विजिन्स एंड द हाई एडवेंचर. Geoffrey Furnall is a writer who was also dealing with some of the political and similar kind of things, लेकिन इन्होंने भी जो कॉलोनाइजेशन के और एक्सप्लोरिंग की बात की है, रोमांटिस की बात करी है, कि दैट इज रोमांटिसिज्म ही हैज टॉक्ड अबाउट इन द टाइम ऑफ मॉडर्निज्म, बट दैट डजंट वर्क प्रॉपरली, क्योंकि इनका जो ब्लैक बार्टलेमीज ट्रेजर है, दैट इज अबाउट द एक्सप्लोरेशन ऑफ समथिंग, बट वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस इन द previous year papers or something, so we can skip this writer as we have never found any work or any of these work. But yes, Martin Conisbee Wiggins can be of some use. If you want, you can read it, but for my side you can just skip this writer because I have never found a good question on it. But this is just be a guess as a group of modernist writer or the realist writer or something like that, so we can do that. But if we go for the another writer, that is fifth one, Arthur Conan Doyle. He is a very important writer. I should mark this writer as important among the complete sheet because इनके जो वर्क है, that is Sherlock Holmes, you need to go through completely. इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते. You need to go through this work completely. इसको आपको पूरी तरह ही पढ़ना है. You cannot just skip doing anything. So this is basically your important work. ठीक है. The Memories of Sherlock Holmes, The Hounds of Baskervilles and The Lost World. Lost World भी इनका important है 1912 का. This is again important work, क्योंकि Sherlock Holmes के ऊपर काफी बार question आया है, और स्पेशली जो आपको करना है इसमें से, that is characters. You need to do the characters of Sherlock Holmes, क्योंकि इसके जो characters है, assistant of Sherlock Holmes, the spy and all, उनके ऊपर continuously questions आते हैं, and it became an important part of literature because it is important part of spy fiction. It is an important part of spy fiction. You cannot just skip it. Next is P.G. Wodehouse. P.G. Wodehouse is again an important writer. We cannot just ignore him. It's a important name. Talk about general traits in people, known as the funny man in the contemporary literature. Obviously, when we read about P.G. Wodehouse, we will get to know that he deals in a comedy, and in his work, that The Dame in the Distress is a comic work in which he talked about feminism. He gave a liberal humor also in that. He raised some of the issue, but it's not satirical, it is just humor what he has presented. But he was a liberal writer, has raised many things. But why we used to call him a funny man on the contemporary literature? Because he raised the contemporary issues in his work, and in a very polished and refined way. With the humor, he has just highlighted it and has not given any kind of moral or philosophy about it. So that is why he followed the general trait of people, and talked about you can say the contemporary culture of things. So his fish preferred is nothing, but the damsel in distress is important. John Masefield, yes, he was the poet laureate as well. So,
as I have given you the list of Nobel laureates, but not the poet laureate. हम लोगों ने जो poet laureate करे थे, वो last I have remembered that we have done it till transition age, and उसके बाद in the modern age or in the romantic age also I have not told you the poet laureate. Then I will tell you all the list of the poet laureates till modern age very soon. I will give it to you. So now let's start because the important writers has to be taken, and मैंने अभी आपको modern age के नोबेल लॉरिएट्स की लिस्ट दी है. तो अभी राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फोकस ऑन द नोबेल लॉरिएट्स फर्स्ट, एंड देन आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ द पोएट लॉरिएट्स आल्सो. जो नोबेल लॉरिएट्स होते हैं, दे यूज देयर वर्क्स आर नॉट अबाउट द पॉलिटिक्स एंड social things or basically on the choices of the rulers and all. They used to write for themselves, for the society, and used to give a very good message, or the poetic beauty should be there. That is why they used to be a part of Nobel committee. But if we talk about poet laureates, they are the court poets which have been chosen by the throne of England. वो जो थ्रोन पे बैठे हुए हैं, किंग्स उनको चूज करते हैं. तो पोएट लॉरिएट्स की भी लिस्ट अच्छी है, एंड ही वाज द वन ऑफ दैट. सो इन्फ्लुएंस्ड बाय शैली एंड कीज, दे आर द रोमांटिक राइटर्स. मैसफील्ड आल्सो वाज वन ऑफ द वन हु uses the imaginations for writing. So to simple people, poetry is a gift of God which fills out and makes radiant this life of ours. So basically here he has said that to simple people poetry is a gift of God which fills out and makes radiant this life of ours, कि हमारी लाइफ को full of lights and colors में डाल देते हैं. So concrete imagination, romantic eloquence, said language hinders expression. कि अगर if we are focusing on the language, then definitely that hinders that object, that spoil the expression, because if you can focus only on one thing, either you can use the best of the language or either you can use a good expression in your literature. So either is your choice, but if you are focusing on one, then obviously the second part will be affected. Now let's go for his works. Gallipoli, story of a heroic but unsuccessful attempt to capture the Danley's verse, Everlasting Mercy, The Widow of Bye Street, Dauber, collected poem about biography, The Seeker, Consecration, a biography, then a letter from Pontus and other was selected poem including Cargoes, Her Heart, Being Her Friend, Beauty, The Vagabond, The Tresky Road. ये इनके poems हैं about that, और out of that they are basically not the famous one, but Mansfield को हम क्योंकि वो poet laureate थे, he has given a good collection, but maximum are the biographic poetries are more over here. So let's go for the another collection, and what we need to know that he is a great poet. That's it. What we need to know, but there is no such poem on which we need to focus basically. ठीक है, he is a great poet, but we don't need to focus on any of the poem. But yes, do remember that he has written a number of poetries in his writing career. So now, yes, it's a time to make an announcement to all of you for the होली हंगामा. Yes, definitely उत्कर्ष लेकर आया है होली हंगामा, जहां पे सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको मिल रही है 90% तक डिस्काउंट एंड 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी. सो इफ यू डाउनलोड द ऐप राइट नाउ एंड फाइंड द सुटेबल कोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड लाइव फॉर योरसेल्फ एंड फाउंड available discounts also. So this offer will bring you to 90% of the discounts. Obviously आप कोई भी कोर्स देख रहे हो, UGC नेट के सभी कोर्सेज पे आपको मिल रहे हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज के ऊपर 90% तक के डिस्काउंट एंड 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी. ये आपका बेसिक यहाँ पे जो हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन इसके साथ और भी कुछ बेनिफिट्स हैं विच आई वांट टू टेल यू. दैट इज द एक्सपर्ट फैकल्टीज आर हियर, एक्सपर्ट गाइडेंस आर हियर, बेस्ट फैकल्टीज आपको मिल रहे हैं. उसके साथ टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर मिल रहे हैं, पीडीएफ्स मिल रहे हैं. आप सभी चीजें ले सकते हैं. उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स या बुक भी भारी डिस्काउंट्स पे आपको अवेलेबल है. सो बुक योर ऑर्डर्स नाउ
for your reading study material for UGC NET examination, and please find out the courses whichever is suitable for you. Paper 1 target batches are here, and you can join us on the YouTube also for the paper 2 for now, and other courses are also there. So you have to find which course is suitable for you for your journey of success and grab the success opportunity as soon as possible. Next, इनके work, the Salt Water Ballad, Right Royal, King Cole, Rayard the Fox, ये इनके 4 वर्क और हैं, जिसमें से जो सॉल्ट वाटर बैलेड है ये सबसे फेमस बैलेड है, बिकॉज ये लास्ट बैलेड है. इनके अंदर जो पोइटिक ब्यूटी इन्होंने यूज करी है दैट हैज नेवर बीन यूज्ड बिफोर बाय हिम ओनली. तो हम मैसफील्ड को एक अच्छे पोइट के रूप में जानते हैं जिसमें इन्होंने ये पोइट्रीज लिखी है. नाउ अल्फ्रेड नॉयस जो पोइट हैं 1880. The Barrel Organ, first of all, is a work. Newspaper Boy, The Highwayman, The Tramp, Transfigured, The Song Tree, Sherwood, Forest of the Time, that is Miss Muffet is the main character here. Drake, Tales of a Mermaid Tavern, The Torchbearer, 4 volume of collected poem which I will describe later. So ये जो Alfred Noyes है, maybe there are some writers which you have never heard the names even. आप लोगों ने हो सकता है इसमें से कुछ writers के कभी भी नाम ना सुने हो, but that doesn't mean कि they are not important. Yes, they are important. Barrel Organ जो इनका work है that is not so important, but इनका Highwayman is worth reading work. Then Tramp, Transfigured, Song Tree, Sherwood, Forest of Wild Theme. This is important. Drake is important. Tales of a Mermaid Tavern, The Torchbearers. This is important. The Torchbearer is again important. Then 4 volumes of collected poem. You just need to know the names of the 4 volumes, nothing else. So that's it. What he has published between the 1910 to 1927. There is no need to go in the detail of the poem because we never seen any kinds of such question on the names of the poetry or to which collection or the particular name of the collection to which the poetry belongs to. इस तरीके के questions हम normally नहीं देखते हैं, तो हमें यहाँ पे भी नहीं मिलेंगे. Next is A.E. Housman. A.E. Housman is 1859 and 1936 is the lifetime. He is a very important writer, and many times you must have seen this writer, and he is also a part of your literary post-war theory also. इन्होंने काफ़ी आपके जो न्यू क्रिटिसिज्म है और स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर हम A.E. हाउसमैन की थियरीज भी देखते हैं. दो ही इज अ राइटर बट ही also became a part of important theories also, so that we need to know. Now next is he believed in humanity to be an unconsequential part of life of nature with its rhythmic flow of life and death. So basically he believed that humanity to be an insubsequential part of life of nature, कि humanity जो इन सब्सिक्वेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ नेचर, नेचर के एक रेगुलर इन चीजों की बात इन्होंने करी है विद इट्स रिदमिक फ्लो ऑफ लाइफ एंड डेथ. दैट इज कि वी नो दैट वी टेक बर्थ, वी डाई, एंड इन बिटवीन देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ विच इज नॉट बेसिकली रिदमिक. दैट कैन बी अनसब्सिक्वेंशियल. वी डोंट नो what is coming next to us. So that is what the life is, and humanity which cannot be compromised throughout. Whatever the situation is, whatever the thing is, but that should be there in the human as nature, because human relates with humanity. Everyone seeks for themselves. So definitely this goes for everyone as a nature. That is what he has talked about. Now the most important work is Shropshire Lad. That is the main work he has written, and इसी पे इनके questions भी आते हैं. Shropshire Lad पे ये work है जिसके अंदर poems जो हैं वो numbers के साथ भी लिखी हुई हैं और उनके ऊपर आपके questions आते हैं. इसमें से जो ये poem दे रखी है Into My Heart, that is important.
When I was 120, ये भी important है. Into my then on Wenlock Edge you can leave, but last poem, more poem is fine. But Shropshire Lad is really important collection by A.E. Houseman, and many times you will see questions. So please इस चीज को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा. Now the next is our very important writer of this age. This is the one जिसको हम मॉडर्न शेक्सपियर भी बोलते हैं. सो अराउंड 40 plays he has written in his lifetime, and that is being categorized as social plays, problem plays, historic plays. So he also has categorized his plays. Now he wrote 40 plays against established order. He wanted to make Englishmen drop their outworn belief and accept his own. Motive was to mock all romantic notion out of English life and literature, convert the misguided people. He defines play as anything that holds the attention of an audience for 2.5 hours on the stage of a theater. इन्होंने 2.5 से 3 घंटे के बीच का जो टाइम होता है उसी में ही प्लेस को थिएटर करने का डिसाइड करा था, और इन्होंने लोगों को होल्ड करने का जो अटेंशन होल्ड करने का आर्ट भी he had that. So he defines play as anything that hold the attention of, and that is what he has worked on also. Now next is Devil's Disciple. डेविल्स डिसिपल जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, दैट इज कंटेन्स एन इंसिडेंट ऑफ बर्गॉन्स इन्वेजन ऑफ अमेरिका. यहाँ पे इनका जो ये वर्क है दैट इज अ मेलोड्रामा, इट्स अ सटायर ऑन 1777. ठीक है, जब अमेरिका ने 1776 के अंदर फ्रीडम ले ली थी, डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को फ्री, तो इंग्लैंड ने एक और अटेम्प्ट किया था टू कैप्चर अमेरिका अगेन. फिर से एक अटैक करा था जिसको कि हम बर्गॉन्स अटैक बोलते हैं, और इसी के ऊपर एक सटायर है. ठीक है, देन सीजर एंड क्लियोपेट्रा, दैट इज अराउंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. इन्होंने सीजर, ऑक्टेवियस एंड क्लियोपेट्रा की स्टोरी को यहाँ पे डिपिक्ट करा है. इट वाज आल्सो नॉट वेरी फेमस इन द अकाउंट ऑफ जीबी शॉप, बट इट गुड स्टोरी. नाउ व्हाट यू नीड टू रीड इज कैंडिडा. इट्स अ मस्ट रीड प्ले, प्रॉब्लम प्ले है. इसमें लव स्टोरी की बात की गई है, ट्रायो की बात की गई है. इट्स अ मस्ट रीड प्ले, ऑब्वियसली यू कैन नॉट अवॉइड दिस. देन द डॉक्टर्स डिलेमा, विडोवर्स हाउस is the first comedy, that is also to read. Then Simpleton of the Expected Island, Fanny's first play, John Bull, Another Island, that is all are the satire on the English and Irish prejudices and all. He is also a Irish writer. So यहाँ पे ये जो दो वर्क अभी तक आपको बताए हैं, Candida and Widower's House is a must read, and after that Pygmalion is the most searched play. And the movie on Pygmalion is My Fair Lady, that is an awarded movie. You all know Elizabeth Doolittle. Cockney speech is being used, and this is the must-read play because इसमें जो story है about the love of Elizabeth Doolittle and the ego and hypocrisy of English society, that can be seen very clearly. Now the next, Arms and the Man, is very very important. Again we can see that this is the again on the hypocrisy and no want of war, how people are taking a war and destroying the life, but actually what is there even in the heart of the soldiers, that is also can be depicted here. So Arms and the Man is for that. Then he combines intellectualism with cause, gives open ending to his play, that the readers, that the viewers can also decide that what can be here. He just give a kind of a happy ending but not an exact ending, that the people can decide. He is a socialist and realist. Obviously that we can see that he is a socialist because he is taking up the social issues frequently for his plays and are raising the thing. Then realist, he is also a realist because he is depicting the thing in such a way that every reader, every viewer can also relate to the scenes of the play, to the emotions of the play, that yes, it particularly belongs to us. That is what he has done in his play, and how he has portrayed the characters in a very fancy, or you can say in a exact way, what they exactly are. Then
Here comes influences as Marx, Ibsen and Nietzsche. ये तीनों जो नाम यहाँ पर आए हैं, इसमें नीशे एंड मार्क आर जर्मन and Ibsen is an Irish writer. He is an Irish playwright. ठीक है, तो ये यहाँ पे एक आयरिश प्ले राइट है, ये जर्मन है, दोनों फिलोसफी, तीनों की फिलोसफी अलग अलग है. जो मार्क्स है, ही टॉक्ड अबाउट द मिडिल क्लास एंड द स्ट्रगल ऑफ मिडिल क्लास एंड the royal class that can be seen in the Arms and the Man as well as in Pygmalion. And if we talk about Ibsen, Ibsen is talking about the shallowness and hypocrisy of the society, the lying of English people for their maintenance of their stature, the misbehavior with the women and their statuses in the English society. And Nietzsche has a different philosophy for the life. It's like one should focus on their own life and they should not interfere, they should not be influenced by what society is guiding, what parents are guiding or any dominant force. You should guide by your own mind and heart because this is your life and you know yourself in a best way. So Nietzsche has a different philosophy which gives you a romanticism in your ideas, that innovative one. You have to explore yourself for the first and experiment with yourself. That is what Nietzsche said, that you cannot put the burden of your dreams on some other's hand. You have to complete it by yourself. Then the next work here is your Mrs. Warren's Profession. Mrs. Warren's Profession is again a very important work. This is again important. You need to read Man and Superman again. Very important here. He has talked about the life force theory, expound of the life force theory. He talked about the Supermans of his life, that how they have worked and how these particular characters in the Man and Superman that has made the people live according to themselves. कैसे वो अपनी तरीके से इनको मोल्ड करते हैं. Then Major Barbara, Arms and the Man we have already done. Then Saint John, epilogue is very important. That is what it is said. Major Barbara is also important, and Saint John, he has talked about the sacrifices of the Joan of Arc, which has been earlier discussed in Saude in Romantic period. Then divorce, we are not getting married, you can never tell. Back to Methuselah, Charles II, we are not going to read any of the play of death, but इनके करीबन 10 के करीब plays हैं जो कि हमें देखने हैं. And these are actually the important plays. तो इसमें Arms and the Men है, Mrs. Warren's Profession है, Man and Superman है, Major Barbara है, Saint John है, The Apple Cart. Another one is The Apple Cart. Also you need to read. ये इनका एक और important play है along with Pygmalion. तो ये 5-6 इनके plays हैं जो आपको पढ़ने हैं. Candida, this is also to be read, and Widower's House. ठीक है, ये 6 plays हैं जिसको आप अगर thoroughly पढ़ते हो तो if anything comes from G.B. Shaw, you can talk about. Next, Celtic Revival. This is also called Irish Revival. हम लोगों ने Celtic Revolution या Celtic Group of Poetry के बारे में पढ़ा. हमने जो अभी पोइट्रिक ग्रुप्स लिखे थे उसमें भी Celtic ग्रुप लिखा है, Irish poets लिखा है. तो उसमें an attempt to bring Irish books to public attention. Abbey Theatre 1904 established by Yeats and Catherine Tynan for the purpose, and the main writers are Hyde, W.B. Yeats, Lady Gregory, Catherine Tynan and J.N. Synge. ये 5 writers हैं who are associated with Celtic Revival, and that is to bring the Irish theatre and Irish writers, their books and works to the attention of English people, that how they are writing or to the world, because they were also writing in the best way when G.B. Shaw was also writing in the same time, and he was you can say a kind of a mainstream writer because his plays were very famous.
in London. He was writing on the contemporary issues, and realistic life writings were there. Depiction of the characters were very good. So similarly, in the Celtic revival, they established Abbey Theatre, and in 1904, for the purpose of getting the attention of the people for Irish plays, right, and Irish literature. So let's start with the work of W.B. Yeats here. सबसे पहले जो राइटर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट राइटर में W.B. Yeats आते हैं. सो बेस्ड ऑन सेल्टिक माइथोलॉजी, इनके जो वर्क्स हैं दे आर बेस्ड ऑन सेल्टिक माइथोलॉजी. और इनका जो ये वर्क है वाइल्ड स्वैन एट कूले, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आया. वी नीड टू रीड. देन द 7 वुड्स यू कैन लीव. Badness of King Gol, you can leave. Bal and Elaine, you can leave. Land of Heart Desire, you can leave. The Shady Waters, the Winds Among the Reeds, Lake Isle of Enspree, Hourglass, Ballad of the Fox Hunter, Byzantium, Sailing to Byzantium, The Second Coming, Lapis Lazuli. ये poems literally important है, and you all know that these are the already heard names. These are not the new names in the section of W.B. Yeats. हम जानते हैं कि इनका जो collection है, इनके जो works हैं, वो basically बहुत सारे हैं. He is not limited only to these works. लेकिन इसमें जो important work है, we need to focus on that. कि इनके और जो वर्क्स हैं, लेट्स सी कि इनके और कौन कौन से वर्क्स हैं. लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दैट आई एम गिविंग यू फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. ओके, लेट्स सी द लिस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ W.B. Yeats. इसमें हम देखते हैं वाइल्ड स्वैन एंड कूले. सबसे पहले इस पे निशान लगा लीजिए. देन इसके बाद आपका आर्गलास, बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम, सेकंड कमिंग, लैपिस लाजुली. ये जितने भी हैं ये सब के सब माइथोलॉजिकल वर्क हैं. और इन्होंने भी इसमें क्रिश्चियनिटी की बात करी है. अबाउट ही हैज टॉक्ड अबाउट यू कैन से the biblical topics has been taken, and the belief in the Christianity is being taken. He talked about his girlfriend Mad Gone, उनकी भी बात करी है. लेकिन उनके लिए जो वर्क इन्होंने लिखा है that is not being depicted here. इसमें यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है. The Island of Statues इनके लिए लिखा था, जो यहाँ मेंशन नहीं है. Mad Gone के लिए इन्होंने जो लिखा है that is Island of Statues, which you need to read. ये important है. और उसके बाद इनके लिए जो भी इन्होंने वर्क्स डेडिकेट करे हैं, I'll give that also to you. Now first of all, He was also a Nobel laureate. ये आप लोगों को ध्यान रखना है. मैंने इसका बताया था आप लोगों को कि he was a Nobel laureate. So now let's see इनके जो ये वर्क्स मैंने आपको बताए हैं. सबसे पहले तो आर ग्लास के अंदर ही हैज टॉक्ड अबाउट द टाइम. इसका इनका जो एक वर्क है दैट इज नो सेकंड ट्रॉय इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड is dedicated to him to her. No second Troy. That is, he said that you are so beautiful, people are mad for you, so you should be conscious about your beauty, and you should not expose it, so that there will be no second Troy. As for Helen, people were ready to die, people were killing each other, so you should be conscious about it, because you I don't want any kind of second Troy for you. You should secure and should dedicate yourself to some particular one. फिर इसके बाद when you are old, ये भी इनकी एक पोएम है जो इन्होंने डेडिकेट करी है इन्हीं को, लेडी को. Then he has also written a poem for her daughter, that is a prayer for my daughter.
A Prayer for My Daughter is a very important poem by him and you have to read this poem क्योंकि यहाँ से आते हैं आपके questions. Wild Swan मैंने बता ही दिया है. Then next जो इनके ये जो works है, Adam's Curse is again another poem. ये भी आपको पढ़नी है. Adam's Curse, the Celtic Twilight. The Celtic Twilight, that is, he talked about the Irish beauty here. And these are the basic poems which you need to read. ये सबसे important poems हैं. इनको आप अगर ढंग से कर लेते हैं तो there is no other work which you need to read in the collection of W.B. Yeats. उसके अलावा इनके जो criticism है, जो इनके famous work हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे. जैसे इनका एक प्ले है द काउंटेस कैथलीन, द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर. ठीक है, ये मैं और लिख रही हूं जो आपको इनके प्लेस करने हैं. दैट इज इनका जो प्ले है द काउंटेस कैथलीन. ये इनका फेमस प्ले है विच ही रोट ऑन 1892. ये जो प्ले है इनका, that is important because in this play he has taken the character, he has basically influenced by the character of Dr. Faustus, and Countess Kathleen is the same character. She is a female character who did the same thing. He did necromancy, called for Lucifer, take the power and assistance of Mephistopheles, but she uses the power for the positive thing. She never used it for the negative. She used the power for for the well-wish of the public, and she is a countess. She did many good works. She never used it for the negative things, for her personal use. So at the time, at the end of the 24 years when the Lucifer came, he cannot even touch him to take his soul, and he has to grant him the life, and she was saved from the death, and the powers have also been granted to her for her कंप्लीट लाइफ. ये आपको इनके वर्क पढ़ने हैं. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट राइटर आपकी आती है कैथरीन टिनैन और मिसेस हिंगसन. इनका विंड्स इन द ट्री एक वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको कि हम देख रहे हैं, एंड दैट इज द ओनली वर्क शी इज फेमस फॉर. सो यू जस्ट नीड टू नो द नेम एंड देयर इज नो नीड टू गो फॉर द डिटेल्स ऑफ द वर्क ऑफ दिस राइटर. नेक्स्ट इज जॉर्ज डब्ल्यू रूसेल. ये एक राइटर हैं, ये भी आयरिश रिवाइवल के हैं, सीरियस पोइट्रीज लिखते थे, एंड नोट्स ऑफ पेंथेइज्म इन द पोइट्री इज हिज वर्क ऑब्वियसली. सो ये हमें देखना है इनका. देन आते हैं J.M. Synge, 1871-1909, and he is condensed style, philosophical and scientific bitterness is there. He is very important writer. हम रूजल का केवल नाम देखेंगे लेकिन J.M. Synge को पढ़ना है. So he wrote short stories, prose, comedies. They teach no lesson, no moral. They called for no reform, about Irishmen and women on coast, dread of the sorrow when youth has fled and the man is left with only memories to comfort him. Playboy of the Western World is the best work he is known for. Humorous from beginning to the end without a single humorous character, and character is Christy Mahon. Next is Riders to the Sea, that is a one act tragedy, and the character is Moria and Bartley. ये इनका बेटा है. ये दोनों ही वर्क ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं. ये दोनों जो इनके वर्क हैं, that is Playboy of the Western World and Riders to the Sea. He is famous for that. Playboy of the Western World एक ऐसा वर्क है जिसके अंदर he was humorous, he was doing comedy, and यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर कॉमेडी नहीं कर रहा है. यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर फुलिश नहीं है, कोई कॉमिक कैरेक्टर नहीं है. स्टिल ही वॉज एबल टू क्रिएट कॉमेडी, एंड बट दिस इज इन दिस प्ले ही हैज टॉक्ड अबाउट द इमोरलिटी. ही सेड हाउ if it is about immorality, everyone is supporting. If it is about morality and ethics, then no one is in
सपोर्ट ऑफ द पीपल। सो यहाँ पे इसने उल्टा शो करा है टू शो व्हाट एक्चुअली द मोरालिटी कैन बी। और राइडर्स टू द सी इज अ ट्रेजेडी, इज अ वेरी पैथेटिक ट्रेजेडी विच यू मस्ट प्ले, विच यू मस्ट रीड, बिकॉज इस पे से काफी क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज अ वेरी डीप एंड इंटेंस वर्क, फिलोसॉफिकल वर्क, एंड दिस इज हाउ ही started his writing, this is how he has done his writing. So Synge को आपको पढ़ना है, इनके काफी works यहाँ पर आते हैं। He is a very important Irish writer here. Then ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड जो है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। इनको विक्टोरियन और इसमें दोनों के मॉडर्न में हम दोनों राइटर्स में पढ़ते हैं। ही डिड साइकोलॉजिकल स्टडी, ही स्टडीड रेयर सेंसेशंस नॉट फॉर्मल एंड मेंबर्स ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट। ऑब्वियसली हम इनको एस्थेटिक ग्रुप ऑफ मेंबर्स कहते हैं। आर्ट फॉर आर्ट से ये बिलोंग करते हैं। ही बिलोंग टू art for art's sake. Okay, then intention, importance of being earnest, the Happy Prince and Other, the Ballad of Reading Gaol, De Profundis, Salome, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ये इनके कुछ वर्क हैं जो इन्होंने लिखे हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी कि हमें इसमें से कौन से वर्क पढ़ने हैं, बिकॉज ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज अ कॉमेडी वेयर ही मेड फन ऑफ द कॉन्टेम्पररी इंग्लिश सोसाइटी एंड द हिपोक्रेसी ऑल्सो। द हैप्पी प्रिंस यू कैन लीव, द बैलेड ऑफ रीडिंग गाओ, हियर ही हैज मेड फन of the Goethe, and that is, he has done all his writings about jail. He was put into jail because of some sexual cases were there on him, and he wrote this collection about himself. So ये इन्होंने इस पे लिखा है, but it is about some criticism also of some writers of this time. Then De Profundis is also an important poem written by him. But the picture of Dorian Gray, इसके अंदर जो characters इन्होंने डिजाइन करे हैं, this play is very very important. You need to read this play, क्योंकि यहाँ पे he has used a kind of magical realism, and इन्होंने जो character portray किया है वो बहुत ही brilliant करा है, and इसके ऊपर question आपके चांसेस जो हैं इन दो प्लेस पे, अर्नेस्ट एंड डोरियन ग्रे पे ज्यादा चांसेस हैं आने के। देन इसके बाद रॉबर्ट ब्रिजेस, अगेन अ पोएट लॉरिएट, एंड ही इज अ ट्रांजिशन पोएट, क्योंकि ये यहाँ पे एक चेंज लेकर आते हैं। हीरोज एंड साइके इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, इज अ पोएट लॉरिएट 1913, फ्रेंड ऑफ J.M. हॉपकिंस, एंड ग्रोथ ऑफ लव, टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी एंड हीरोज एंड साइके, ये इनके पोएम्स हैं। यू कैन रीड, यू कैन लीव, बट रॉबर्ट ब्रिजेस इज एन इंपॉर्टेंट पोएम, और इनके कुछ पोएम है एक्स इक्वल्स टू 0 एंड इफ, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो ड्रिंक पॉटर का है, इसका नहीं है। नेक्स्ट एंड द लास्ट राइटर ऑफ आयरिश रिवाइवल इज सीनो केसी। सीनो केसी जब हम करते हैं, ही इज एन आयरिश एंड अनअवॉइडेबल डेस्टिनी, टॉक अबाउट द वीक मैन एंड वुमेन। ही ऑल्सो पोर्ट्रेड द ज्यू कैरेक्टर्स, जूनो एंड पेकॉक। इनका जो वर्क है, द प्लो एंड द स्टार, इनका जो वर्क है, ये दो वर्क हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दीज वर्क्स ही शोड द कॉन्टेम्पररी कैरेक्टर्स, hypocrisy and fake ideals of love and marriages also. That is what he has showed, and how people are taking advantage of each other, that is being shown. The Jew culture is being shown, and along with that I must say कि यहाँ जो इन्होंने पोर्ट्रेयल करा है कैरेक्टर्स का, जूनो एंड द पेकॉक में, is about the failed and hypocrite marriage of English society. So do read this work, The Plow and the Stars. That is about also the hard work of the characters of the English society. That is also important. Silver Tassie, Within the Gates, ये भी इनके वर्क हैं, लेकिन अगर आप ये दो वर्क भी पढ़ लेते हैं which he is famous for, that will be more than enough अगर आप इन वर्क्स को कर लेते हैं। Now we have done various important writers of your modern age, especially till today. आज की क्लास तक हम लोगों ने काफी मॉडर्न राइटर्स को करा है, जिसके अंदर आपके आयरिश रिवॉल्यूशन की हमने बात करी है,
सेल्टिक रिवॉल्यूशन या आयरिश रिवॉल्यूशन की बात करी है, जिसमें थिएटर्स आ जाते हैं आपके, तो यहाँ से आपकी थिएट्रिकल जर्नी भी होगी। काफी सारे ऐसे राइटर्स आएंगे जो कि थिएट्रिकल ग्रुप से भी डिपेंड करेंगे। तो व्हेन वी विल टॉक अबाउट द पोइटिक ग्रुप एंड पोइटिक मूवमेंट्स, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट थिएटर्स लाइक किचन सिंह ड्रामा एंड अब्सर्ड ड्रामा, उस तरीके के थिएटर ग्रुप्स भी यहाँ पे स्पेशली आ जाएंगे, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिटरेरी ग्रुप्स, बट हम लोग पोइटिक और थिएट्रिकल ग्रुप्स को अलग अलग पढ़ेंगे, ये भी ध्यान रखना है। और मॉडर्न टाइम्स में जो हमारा ये लिटरेचर नया नया इनोवेट होकर आ रहा है, इसको आप लोग बहुत कॉन्शियसली पढ़ेंगे, स्पेशली जो राइटर्स हैं उनकी जो थीम्स या उनके पर्टिकुलर वर्क आर सेंटर्ड फॉर, उसका आप लोग ध्यान रखेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू अबाउट द उत्कर्ष ऐप एंड द होली हंगामा फेस्ट व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग विद यू। वी आर गिविंग a 90% off on all the courses, along with that 3 months extended validity. So grab the opportunity and download the app, search for your courses and purchase it right now. So thank you so much. Bye everyone. Take care.